this video, we will study about uniform circular motion. Till now, we have studied motion in a straight line. Now, we will be discussing motion in a circular path. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Means, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, this is a circular track and athlete is represented by this red circle, and when he moves in the circular path, this becomes the example of uniform circular motion. Another example of uniform circular motion is Earth that revolves around the sun. This is one of the most common example of uniform circular motion. Now let's understand uniform circular motion in detail. Consider a rectangular track and some points marked on it. This is the athlete, represented again by this red circle. Now he travels on this rectangular path with a speed of 10 meters per second. In this way. So here speed is 10 meters per second. But what about the velocity? We know that velocity constitutes two factors. One is magnitude and the other is direction. In this case, the magnitude is 10 meters per second. But what about the direction? Is direction same everywhere? When the athlete moves on this rectangular track, he has to change his direction 4 times. From A to B, B to C, C to D, and again D to A. So, direction is changing. This is an example when an object does not change its magnitude of velocity, but only its direction of motion. And hence we can say that here velocity will change because its direction is changing. Now consider another track, hexagonal track. Again the athlete starts moving from point A. In this case, the athlete has to change its direction 6 times from A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, and then F to A. Similarly, if we take an octagonal track, an athlete starts from point A, then he has to change his direction 8 times from A to B, B to C, C to D, and so on. So, when we continuously increase the number of sides, we'll obtain a circular track. In this way, we can say that on the circular track, the athlete changes direction at every point. You can see, हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इसका मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. सो इन चीजों से हमने क्या कंक्लूड किया? We conclude that in uniform circular motion, speed of body is constant. Direction of motion changes continuously, so velocity changes continuously. क्योंकि डायरेक्शन बार बार लगातार चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. थर्ड पॉइंट, एंड सिंस वेलोसिटी चेंजेस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होती है बेसिकली विद टाइम. और अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो सर्कुलर यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सी. इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स t seconds to go once round the circular path of radius r, the velocity v is given by. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज एक ऑब्जेक्ट t सेकेंड्स ले रहा है पूरा एक सर्कुलर राउंड कवर करने में, जिसकी रेडियस क्या है? सर्कल की r है. तो उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है? लेट्स सी.
वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारा इस केस में क्या है, ये एक सर्कल है सपोज, तो इसकी ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गई हमारा डिस्टेंस बेसिकली, एंड इट इज द टाइम। So finally we get the formula V is equals to 2 pi r upon t. Why 2 pi r? Because it is the circumference of the circle and t denotes the time. Here we have seen. Also pi की वैल्यू क्या आती है 22/7. Okay. Now we will discuss uniform circular motion with another example. Suppose this is a boy and he is taking a piece of thread and tie a small piece of stone at one of its end. अब वो इस थ्रेड को रोटेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। सपोज ये उसका ट्रैक है, इस पे वो स्टोन को कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। सपोज उसका थ्रेड टूट जाता है, तो जो स्टोन होगा वो किस डायरेक्शन में जाके गिरेगा, उस डायरेक्शन को अब हम डिस्कस करेंगे। सपोज उसका थ्रेड यहाँ पे टूटा, इस पॉइंट पे आके, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसका थ्रेड टूट गया, तो यहाँ पे जो स्टोन है वो कहाँ पे गिरेगा जाके, इस वाले डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं सर्कुलर के कंसेप्ट्स में, टेंजेंट कहते हैं। अगर उसका थ्रेड यहाँ पे टूटा, सो स्टोन विल गेट फॉल इन दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पर टूटा तो दिस इज द टेंजेंट, एंड अगर यहाँ पर देन दिस इज द टेंजेंट। चलिए इस कंसेप्ट को आगे और सीखेंगे। पहले एक फोर्स पढ़ लेते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन द सर्कुलर पाथ। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है सर्कुलर पाथ पे, उसको एक फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स क्या होती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं, सपोज ये रेडियस है सर्कुलर पाथ की या सर्कल की, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज थ्रेड छूट जाता है तो टेंजेंट ये होगा, और आप सोचेंगे हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट बेसिकली रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऑल्सो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हुआ। अगर हम किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी हो वेलोसिटी की, सो वी कैन कंसीडर दिस टेंजेंट, बिकॉज हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट वाला। ऑल्सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा सर्कल के सेंटर पे एक्ट करती है, ये भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सो व्हाट डू वी कंक्लूड, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल्सो फोर्स एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके।